today's lecture, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, Symbol of Knowledge and We the People of India. Sir, I invite you, please, and we are waiting for your lecture. Thank you. At the outset, I would like to express my thanks to Honorable Director, Dr. Amitabh Pandeyji, Dr. S.K. Pandeyji, Ashokji, for giving me this opportunity to have an academic interaction with you on the auspicious occasion of 134th or 135th, whatever you may call it, Baba Saheb Ambedkar Jayanti. Friends, I was just discussing with the Honorable Director. In 1994, I first published one article, research article on Baba Saheb Ambedkar water policy. I was not criticized about the content of that water policy that Baba Saheb Ambedkar was envisioning for India. But I was criticized for dilating Baba Saheb Ambedkar from social justice to some other aspect which are negligent at that time. We know the importance of water today, but Dr. Ambedkar knew the importance of water way back in 1940s. So what I am trying to highlight here is there is a big divide, big gap between we the people of India and the symbol of knowledge. And what is that gap? And to my whatever small understanding as a student, Baba Saheb Ambedkar writings and his philosophy, as a student, how much I could gather, I would just like to share with you. I think more than 200 lectures I have delivered on Baba Saheb Ambedkar. And most of the time I am emphasizing on this aspect only, how to project Baba Saheb Ambedkar as a symbol of knowledge, as an academician, as a researcher, rather than limiting him just to a Dalit Masiha. He has done a lot for these communities, lower communities, but he's much more. His vision is much more for the humanity, much more for the entire globe. Baba Saheb Ambedkar is a global Ambedkar, I would say. We are living in his age, and we need to appreciate that. Why we are limiting Baba Saheb Ambedkar? Why we are limiting him to 14th April only? और दीपक सर ने जिन मुद्दों को उठाया है, ये दो विचारों का संघर्ष भी है, एक्सेप्टिंग है स्कॉलर। एक स्कॉलर को मानना और उनको न मानने का भी द्वंद्व जो आप बता रहे हैं कि एक वर्ग उनको माना है, अभी तक नहीं माना है, एक वर्ग जो माना है उसने किस तरह माना है, ये दोनों ही संवाद वहाँ भी है। समटाइम स्कॉलरली थिंग्स आर नोन आफ्टर सेंचुरीज। गांधी और इन दोनों के लिए ही कहा जाता है कि कई सदियाँ लगेंगी उनको समझने के लिए। ये उन सदियों के लोग हैं जो इतने सरलता से नहीं समझ सकते, और जिस संघर्ष से उठकर किया है, कंपेयरिंग विद गांधी, ही डिड, इनका स्ट्रगल ज़्यादा अलग था, इनका स्ट्रगल बहुत डिफरेंट था। एटलीस्ट गांधी का फैमिली बैकग्राउंड, उनके पिताजी दीवान थे, उनको सब मिला था। एजुकेशन को बेसिकली दैट अगेन द वर्ड एजुकेशन जो हमारे यहाँ होता है, हम डिग्री तक ही अपने आप को एजुकेशन मानते हैं, एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम विथ इज़ दैट कि आवर एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह डिज़ाइन हुआ है। बिकॉज आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स ने उनके लिए जो सर्विस क्लास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, उससे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन की थी जो उनको सर्विस सेक्टर दे। एंड हमारी ट्रेनिंग में भी करीब करीब वही सेक्टर आ गया हमारे आज तक भी। वी आर अनेबल टू फाइंड वेज बियॉन्ड जस्ट कि हमारा पढ़ाई होगी, डिग्री होगी, ये सरकारी नौकरी में अप्लाई होगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।